Hi students, I am Dr. Anurag Agarwal and this is OSN Academy of English since 1998. Today the session which I am going to take is quite difficult for many of the aspirants or students all over India. And it is also true that so many questions are asked in various examinations of literature. So I thought to give sessions on the topics of literary theory, that is the proper terms. For example, New Criticism by John Crowe Ransom. So the first topic which I am going to explain, which is of utmost importance, is New Criticism. New Criticism by John Crowe Ransom. I am writing in short to save your time. Now students, if I talk about न्यू क्रिटिसिज्म जॉन क्रो रैंसम, तो न्यू क्रिटिसिज्म को पहले समझिए या जॉन क्रो रैंसम को, दोनों को आपको समझना है. न्यू क्रिटिसिज्म में देयर आर थ्री डिफरेंट थिंग्स, 1, 2 and 3. If you understand these three things, I am very much sure that you will be able to solve any questions regarding UGC NET exams, whatever questions will come. न्यू क्रिटिसिज्म, अभी हम आपको जॉन क्रो रैंसम के बारे में भी बताएंगे. यहां पे ये देखिए, जॉन क्रो रैंसम was the founder of the न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट. फाउंडर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, फाउंडर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट. पहला पॉइंट, अगर कोई आपसे पूछ ले तो immediately you can answer that yes, he was the founder of new criticism movement. The second point is he was a great influential literary critic and poet. Influential literary critic and poet. Second point in short. And the third point which you can write about Ransom is advocate for formalist analysis. Advocate for formalist analysis. Advocate for formalist analysis. See, first point, second point, third point. So these 3 points will affect you a lot to understand in short. Now, ये तो डिटेल हो गया आपका जॉन क्रो रैंसम का. Now, he has taken this term new criticism. What is new criticism now? Emphasis on close reading. ये देखिए पहला, emphasis on close reading. अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए कि कौन सा टर्म है बाय रैंसम का which has the emphasis on close reading, immediately आप टेक कर सकते हैं न्यू क्रिटिसिज्म. कहीं भी एक्सप्लेन करना हो, कहीं भी बताना हो, immediately you will get the answer. The second point will be new criticism focuses on text or as autonomous and self-contained. पहला point, emphasis on close reading. Second point, focus on text. इसको लिखिए यहाँ पे, focus on text. Focus on text कैसे? As autonomous. As autonomous and self-contained. Self-contained. ये हो गया सेकेंड पॉइंट बच्चों. थर्ड पॉइंट होगा रिजेक्शन ऑफ ऑथोरियल इंटेंट. किसको रिजेक्ट किया? ऑफ ऑथोरियल इंटेंट एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. मैं थर्ड पॉइंट लिख देता हूं, रिजेक्शन. यहां लिख लीजिए, शो हो रहा है कि नहीं देखिए. हाँ, रिजेक्शन ऑफ ऑथोरियल इंटेंट. ऑथोरियल इंटेंट एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. एंड historical context. Now, in this entire section of new criticism, I am very much sure you have got everything in control, that too
in a 2 minutes explanation. So बच्चों, आपको ये शॉर्ट में explanation about ransom, about new criticism कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पे, एंड दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म. आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि यस सर, this short explanation was quite good to understand for the examination point of view. The second point, second term which I am going to take is structuralism. And yes, who has been the founder of this? Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure. इतना तो शायद आपको पता ही होगा. Now, Ferdinand de Saussure talks about linguistics. ऐसे आप बनाते चलो, linguistics. अब इसमें there are 4 points. यही क्वेश्चंस आते हैं बच्चों नेट में. 4 points. पहला देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड and fourth. How many of you can tell me what are these 4 points which come under the topic linguistics? पहला is, first is signifier. The second is signified. The third is synchronic analysis. Synchronic analysis. And the fourth is diachronic analysis. Diachronic analysis. Fine. So see, in short, structuralism, Ferdinand de Saussure, linguistics, signifier, signified, synchronic analysis and diachronic analysis. Now, यहां पे अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सिग्निफायर? जब तक हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे इट विल बी इनकम्प्लीट. व्हाट इज सिग्निफायर? सिग्निफायर इज एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट इन लिंग्विस्टिक्स. ये क्या है? इट इज अ कॉन्सेप्ट. कहां पे? इट इज अ कॉन्सेप्ट इन लिंग्विस्टिक्स. एंड this concept in linguistics was introduced by Ferdinand de Saussure, which refers to the physical form of a word or sign that carries meaning, जिसमें meaning होता है. So ये concept है linguistics में signifier, जो कि Saussure ने इंट्रोड्यूस किया था, जो रिफर करता है एक फिजिकल फॉर्म को, एक शब्द को या एक साइन को जिसमें एक मीनिंग होती है, विच कैरीज अ मीनिंग. फाइन. नाउ अब हम आते हैं सिग्निफाइड में. सिग्निफायर हो गया, अब हम आते हैं सिग्निफाइड में. सी, सिग्निफाइड में बहुत ज्यादा कुछ समझने की चीजें हैं. पहला पॉइंट है सिग्निफाइड में कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है ना, इट वॉज बेसिकली अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था जो डेवलप किया गया फर्डिनेंड डी सौसोर द्वारा इन द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स. पहला बहुत सरल. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू नो कि इसका जो फोकस था वो कहां था. इट फोकस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, इट फोकस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज. एंड when it was focusing on the structure and the organization of language, it was emphasizing the relationship between elements within a system rather than their individual meanings. और अगर हम सौसोर की थ्योरी की बात करें, इसी में थर्ड पॉइंट, इन सौसोर थ्योरी a sign consisted of a signifier. एक जो साइन होता है that consists of a signifier, the form or you can say the sound pattern, and the signified means the concept or the meaning associated with the signifier. And my dear students, the concept of signified ye refers to the mental image or idea that is actually evoked by you can say the structuralism which has a theoretical framework. Now
The third point comes, what is synchronic analysis? Can anybody tell me what is synchronic analysis? Synchronic analysis में आपको ये समझना है कि जो ये टर्म है ना, structuralism, it is basically a theoretical framework developed by Saussure in the field of linguistics. Again ये repeat होगा. Now, it emphasizes the importance of understanding language. ये emphasize करता है कि भाई language को understand करने की क्या importance है, और जो system है of interconnected elements as a system of interconnected elements rather than focusing on individual words or individual sounds. ये सिस्टम है इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स को समझने का. फाइन. नाउ एक पॉइंट और आता है सिंक्रोनिक एनालिसिस में. सिंक्रोनिक एनालिसिस जो है वो बेसिकली एक की कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरलिज्म का. इट इज अ की कॉन्सेप्ट इन स्ट्रक्चरलिज्म which involves studying language at a specific point of time without considering its historical development. उसका historical development की ज़रूरत नहीं है. और ये जो synchronic analysis है, ये जो approach है उसको allow किया गया था for the exploration कि किस प्रकार से different linguistic systems relate to each other within a particular context. And yes, structuralism is a theoretical framework developed by Ferdinand Saussure in the field of linguistics. Fine. Now, last point आता है diachronic analysis. What is diachronic analysis? आप लोग बच्चों लोग जब नेट का पेपर देते हैं तो आप लोग परेशान होते हैं क्योंकि आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं होता या कोई पढ़ाता नहीं है. तो जितनी भी चीज़ें थ्योरी से रिलेटेड है, लिटरेरी थ्योरी से है, क्रिटिसिज्म से है, थोड़ी सी कठिन होती है. इसीलिए आज मैंने ये प्लान किया कि आपको हम इस तरह के कॉन्सेप्ट्स दें. और बिहार बीपीएससी पीजीटी को पढ़ाइए से. बिहार पीजीटी भी चल रहा है क्लास. भव्या गुड मॉर्निंग दीपक. सो जो डायक्रॉनिक एनालिसिस है इसमें आपको एक बात बताऊंगा कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है, अगेन द सेम थिंग, इट फोकसेस ऑन analyzing language as a structure of interconnected elements and emphasizes the relationship between these elements. Now, diachronic analysis within structuralism involves studying the historical development and evolution. Fine. So this is what in short is about. I told you about structuralism by Ferdinand de Saussure. तो बच्चों इसको शॉर्ट में डायग्रामेटिक और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, हाउ वेल यू रिसीव्ड इट, आपको कैसा लगा उसको ज़रूर बताइए. अब हम थर्ड पे चलते हैं. आई एम मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. यहाँ पे बस केवल आपको वर्ड लगाना है POST, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. हाउ डिड यू लाइक स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको? दो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया. हाउ डिड यू लाइक? नाउ दिस पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वी ऑल नो इज बाय Jakes means Jacques Derrida. If you like the students, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा न्यू स्टूडेंट्स. एंड यस, लाइक द प्रेस बटन इफ यू फील दैट यस आई लाइक द सर क्लासेस. नाउ post-structuralism. Any idea? Anything would you like to tell me? अब post-structuralism में जो चीजें आती हैं मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं. I am just waiting for some of your comments. Any questions? Chandani, good morning Chandani.
post-structuralism, yes. Now, what is post-structuralism? समझने की कोशिश करिएगा. It is a philosophical. What is this? It is a philosophical. ये क्या है? It is a philosophical and ये आपके इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है. And literary movement that emerged in 20th century. Now, post-structuralism challenges the idea of stable, universal meanings and also emphasizes the role of language, power, and social structures in shaping knowledge and reality. Now, the key figures which are associated with post-structuralism include, बहुत important है, Michael Foucault, Jacques Derrida, Ronald Barthes, and Julia Kristeva. These four names are very important, who are the key figures with post-structuralism, include Michael Foucault, Jacques Derrida, Ronald Barthes, and Julia Kristeva. The post-structuralist thought has had a very, very significant impact. किन fields में? ये question पूछा जाता है. Fields such as literary theory, such as cultural studies, even sociology and political theory. एक ये point हो गया. Now, this movement has been critiqued for its perceived complexity, for its difficult to understand concepts, but ये continue करता गया. It went on continuing to influence the contemporary intellectual discourse. Kavi Patel, good morning. Arif Ahmed, Michael Foucault, yes. So this is of great importance. Now, the fourth point which I am going to discuss along with this is deconstruction. Deconstruction. Three points I have taken. Now I am going to take the fourth important term in the field of literary theory. Deconstruction. Yes. Can anybody tell me? जैसा मैं देख पा रहा हूं बच्चों, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ लाइव हैं, और अगर उनको ये क्लास सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा. जस्ट प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड यस, if anyone wishes to command literature for their upcoming examinations, many new batches have been given in the last 2 days. So just you have to download the application OSN Academy from the Play Store and see the new batches which have come for the students. So deconstruction क्या है? Deconstruction हमने आपको अभी बताया ही, that it is a philosophical theory and a method of textual analysis. This is actually a philosophical theory और एक method है. Method किस बात का है? It is a method of textual analysis developed by the French philosopher Jacques Derrida. इसमें क्या क्या चीजें involved हैं? It involves questioning. It involves critiquing the underlying assumptions. जो assumptions हैं, जो underlying हैं, उनको हम question करते हैं, उनको critique करते हैं, और hierarchical oppositions within a text of discourse. And deconstruction जो है, उसका aim क्या है? The aim is to reveal the complexities. जो complexities होती है ना, उसको reveal करना इसका काम है. Deconstruction aims to reveal the complexities, contradictions, and multiple meanings present in language, present in thought.
and Derrida's deconstructive approach, इसका जो deconstructive approach है वो बहुत influential रहा है in literary criticism, philosophy and cultural studies and other fields of study. अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट्स की जो deconstruction से associated है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं लिख भी देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, की कॉन्सेप्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स को लिख लीजिए, की कॉन्सेप्ट्स विद deconstruction, key concepts with deconstruction include, पहला डिफरेंस, स्पेलिंग देखिएगा डिफरेंट है ये, ट्रेस, मैंने इसे पढ़ाया है पिछले बैच में, ट्रेस, बाइनरी अपोजिशंस, binary oppositions and the destabilization, fine. Catharsis is a pent of emotions, जब हमारे emotions निकलने होते हैं, that is called catharsis. Pent up emotions जो भरे होते हैं, and when we have to relax, that is called catharsis. That is a very important point. आगे चल करके हम catharsis को भी डील में डिटेल करेंगे. Fine. Now, the fifth point which I wish to take is reader response theory. बच्चों, आपको क्लास कैसी लग रही है? Is it a good class? Are you feeling interested to study? क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो ही हमारे को पढ़ाने में और इंटरेस्ट आएगा. So just have a thumbs up, press the like button, and that like button, I as a teacher understand, yes, हमें पढ़ाना है बच्चों को, उनको अच्छा लग रहा है. Fine. Reader response theory. Reader response theory. सी स्टूडेंट्स, जब बच्चे हमारे चैनल पे होते हैं उसके बाद ऐप को डाउनलोड करके हमारी पेड क्लासेस में जाते हैं, दे आर एक्चुअली ब्लेस्ड. व्हाई ब्लेस्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल दे गेट द प्रॉपर सिलेबस वाइज कोर्स, प्रॉपर कंटेंट, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एमसीक्यूज एंड माय प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. जैसे ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, चूंकि यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, हमको और भी चीज़ें पढ़ानी है, बट व्हेन यू आर इनटू द क्लास in my application, these points are taught much in detail, because in the class the environment is different and the students are particularly of that area of that examination, so that controlling is different. I teach so many batches, so सब में बच्चे अलग अलग होते हैं. यहाँ पे क्या है, यहाँ कोई बच्चा बीए का है, कोई आईएएस का है, कोई नेट का है, किसी को केवल शौक है, तो वो फोकस नहीं हो सकता बच्चों. तो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है, इट इज बेसिकली अ लिटरेरी थ्योरी दैट फोकसेस ऑन द रीडर्स एक्सपीरियंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टेक्स्ट. इसको लिख लीजिए, इट इज अ लिटरेरी थ्योरी. आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं कि ये रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी क्या है. इट इज अ लिटरेरी थ्योरी दैट फोकसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होगा कि हाँ सर ने पढ़ाया है, आप इमीडिएटली इसका आंसर दे देंगे. इट फोकसेस ऑन द रीडर्स एक्सपीरियंस, द रीडर्स एक्सपीरियंस एंड, और क्या, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टेक्स्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा अगर आपने इतना बोल दिया कि रीडर रिस्पॉन्स इज अ लिटरेरी थ्योरी दैट फोकसेस ऑन रीडर्स एक्सपीरियंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टेक्स्ट. कवि पटेल जी कहती है, आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी इंग्लिश लिटरेचर
optional with you. Currently, I am doing my bachelor's degree in English. Meanwhile, I want to prepare for UPSC. What will be French core batch बेटा? कभी बेटा अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको और सभी बच्चों को ये बता दूं कि OSN Academy and Dr. Agarwal sir has been teaching UPSC past 2 decades. और इस समय अगर आप जो बैच चाहती हैं वो अभी मुश्किल से 5 दिन पहले, the 5 days before the new batch has started, you are lucky that you are getting the new batch. In case of any guidance, the number is given on the screen. You can take the appointment from my executive and talk to me and I will give you all the guidance. Because ऐसा हो सकता है कि इस समय हमारे लाइव चैनल पे सारे बच्चे यूपीएससी के नहीं हैं और डिफरेंट फील्ड्स के हैं, तो आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो मैं ही आपको बता सकता हूं और 1-to-1 हम कम्युनिकेशन करके आपको गाइड कर सकते हैं. बट यस, इवन द BA Part 1, even the BA Part 2 students are studying for 2026 and even for 2027. The new edition books have been launched. So it is a win-win situation for all those UPSC aspirants who wish to take the new batch as well as the new edition books and all my guidance. It is not a place where you have to worried. 1% भी आपको कवि पटेल जी worried नहीं होना है, because this channel belongs to Professor Dr. Agarwal and it is a different world altogether, because here I personally take all the problems, all the things for the students for any batches. So coming to the point, literary reader response theory is a literary theory that focuses on the reader's experience and interpretation of a text. Now, ये हो गया पहला point. Now, the second point says that reader response theory हमें suggest करता है कि जो मीनिंग होती है ना, मीनिंग मर्थ, वो क्रिएट करते हैं हम. द मीनिंग इज क्रिएटेड थ्रू द इंटरैक्शन. एक जो मीनिंग है वो कैसे क्रिएट करता है, हमें ये थ्योरी बताता है कि इंटरैक्शन करो बेटा, वो क्रिएट होता है. मीनिंग को क्रिएट करना पड़ता है. कैसे? हमें इंटरैक्शन करना होता है रीडर से और टेक्स्ट से. फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी किताब उठाएं, हम रीडर हैं और रीडर जो किताब पढ़ रहा है वो टेक्स्ट है. There has to be interaction between the reader and the text, rather than being solely determined by the author's intention. No, केवल हमें author के intention से determine नहीं होना है. You have to interact between the reader and the text rather than being solely determined by the author's intention. That is called reader response थ्योरी. इसका नाम ही है रीडर क्या रिस्पॉन्स कर रहा है विद द टेक्स्ट, विद द ऑथर्स इंटेंशन, क्या उसमें इंटरैक्शन है. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी. नाउ, इस थ्योरी के जो प्रोपोनेंट्स हैं, प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी, वो आर्ग्यू करते हैं दैट रीडर्स ब्रिंग देयर ओन एक्सपीरियंस. ये बात तो आप जानते ही होंगे कि हम कोई भी किताब पढ़ते हैं, जो इनके थ्योरी के प्रोपाउंडर्स हैं, प्रोपोनेंट्स हैं, वो इस बात को डिस्कस करते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि जो रीडर्स होते हैं, दे ब्रिंग देयर ओन एक्सपीरियंसेस, दे ब्रिंग देयर ओन बिलीफ्स, दे ब्रिंग देयर ओन वैल्यूज ऑफ देयर रीडिंग, जिनकी वजह से विच शेप्स देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, और वही उनके टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग को शेप करता है. फाइन. नाउ, reader response theory emphasizes the subjective nature of interpretation, the subjective nature of highlights, how different readers can have vastly different responses to the same text. एक फिल्म होती है, फिल्म को करोड़ों लोग देखने जाते हैं. कैसे आप देखिए रेस्पॉन्स अलग अलग होता है. हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हमारी बुक्स हैं, बच्चे डिफरेंट तरीके से रेस्पॉन्स करते हैं. Most of them they say the good is wow, the classes is wow, amazing. कुछ बच्चे कहते हैं the classes are not wow, not amazing. It should be like this, it should be like this. So the more readers, the more viewers, the more response to, and the text is same. As a student, as a teacher, as a professor, there are lakhs of students who are studying under my guidance. But all the students cannot have the same thing for
for the same teacher. In the same way, there will be different responses to the same text. So, ये जो approach है ना, this approach ये encourage करती है किस चीज के लिए? एक क्लोज एग्जामिनेशन के लिए कि हाउ रीडर्स एंगेज विद लिटरेचर, कैसे जो रीडर्स है वो एंगेज हो जाएंगे लिटरेचर के थ्रू, एंड हाउ देयर रिस्पॉन्स, और कैसे हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कंट्रीब्यूट करेगा, हाउ देयर रिस्पॉन्स कंट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग विद इन अ टेक्स्ट। कैसे हमारे रिस्पॉन्स को हम ये समझ पाएंगे कि क्या अंडरस्टैंडिंग है उस मीनिंग की जो उस टेक्स्ट के अंदर छुपी हुई है। फाइन, सो आई एम श्योर कि ये जो 4-5 हमने कितने पॉइंट लिए हैं लगभग, सी I have written down for you. I have taught you new criticism. I have taught you structuralism. I have taught you post-structuralism. I have taught you reader response theory. I have completed 5 very important things for you for your examinations. इसी का एक बहुत बड़ा रूप हमारे क्लासेस में चलता है, हमारे पेड क्लासेस में, हमारे एप्लीकेशन पे जो हजारों बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे होते हैं उनको हम इनके अंदर बहुत आगे डिटेल जाके पढ़ाते हैं, उनके क्वेश्चंस आंसर्स भी कराते हैं और बहुत कुछ। बट यू कैन हैव अ proper understanding that how Western Academy or Dr. Agarwal teaches. Now I wish कि जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं वो कोई ना कोई मैसेज लिखें कि हाँ सर मुझे ये क्लास पसंद आई, मुझे पढ़ना है और मुझे आगे लाइफ में बढ़ना है। Any comments? I am ready to take, I am ready to give you all the guidance and all the answers. Now the time is for you. Mic goes to you. It is your platform now. Come on. Thank you, students.